Hi everyone, welcome to this A to Z series for RBI Grade B. In this series, we are discussing each and every aspect of your RBI Grade B preparation so that all your queries get answered at one place. इस वीडियो में हम D for Decoded Syllabus डिस्कस करने वाले हैं, but we will not be discussing the full syllabus. हम सिर्फ Phase 1 का syllabus डिस्कस करेंगे. That's why this video has been named Part 1. In the Part 2 of the Decoded Syllabus, we will discuss about the syllabus for Phase 2. और इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड ए फॉर ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, बी फॉर बुक्स एंड सी फॉर कंपटीशन. इन केस यू वांट टू वॉच ऑल दीज वीडियोस, then these are available in this playlist, and the link for this playlist is available in the description of this video. Now, why to watch this video? There are a lot of videos on the decoded syllabus where they tell you about now what is the syllabus in the notification versus what is the actual syllabus and all. But why watch this video? Because in this video, the details I am going to give you, especially with respect to GA, because GA is one of the toughest section to decode and the most important because its weightage is 80 marks. तो जो डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे. आप वीडियो देखकर खुद ही समझ जाएंगे दैट व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग अबाउट दोस डिटेल्स. अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा दैट व्हाई आर वी डिस्कसिंग द सिलेबस? Isn't it given the notification? I mean, isn't it very clear from the notification itself that ये syllabus और ये पढ़ लो? Very valid question. अब देखिए फेज 2 का तो देर इज अ काइंड ऑफ सिलेबस विच इज गिवन इन द नोटिफिकेशन, दो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव. But since this video is about phase 1, for phase 1 I want to tell you that for quant, reasoning, English, GA there is no syllabus given in the notification. मैं आपको notification दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है the paper 1 in phase 1 will consist of GA, English, ये सब दिया है. पैटर्न के बारे में बताया है 120 मिनट्स होंगे, ठीक है. कटअप्स के बारे में बताया है, बट दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट सिलेबस एट ऑल. सो इन द नोटिफिकेशन देयर इज नो सिलेबस for phase 1, and that is why this video becomes even more important, so that you understand that what is your syllabus, you understand what is your scope. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है चलो सिलेबस नोटिफिकेशन में गिवन नहीं है, दैट what is this big fuss about understanding the syllabus? I can pick up any standard book and I can just start reading that book के क्वांट की बुक पढ़ ली, रीजनिंग की बुक पढ़ ली, इंग्लिश की बुक पढ़ ली, उससे मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. मुझे सिलेबस जानने की जरूरत ही क्यों है? So again, I'll put few questions to you. Do you think that is effort equal to selection? मतलब अगर आप effort मारेंगे आपका selection short हो जाएगा. Or in other words, do you feel that the person who puts the maximum effort, कि जो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है उसी का selection होगा? The answer is no, right? Then what is that factor which helps you or which makes you get the seat in one of the top regulatory bodies of India? The answer is directed effort. ये जो डायरेक्टेड वर्ड है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डायरेक्टेड एफर्ट, व्हाट डज इट मीन? कि आप सही चीजें पढ़ रहे हो, एनालाइज करके पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो. तो ये डायरेक्टेड एफर्ट आएगा कैसे? सिंपल, एग्जाम रेलेवेंट पढ़कर. बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग एग्जाम रेलेवेंट, यू नो व्हाट इज कमिंग इन द एग्जाम, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी. अब ये एग्जाम रेलेवेंट आप कैसे पहचानेंगे? If I ask you that you should be reading exam relevant, how do you find out that what is relevant for you and what is not relevant for you? The answer is again pretty simple. आप सिलेबस को पढ़िए, आप PYQs को देखिए, ठीक है. एग्जाम रेलेवेंट कैसे पता लगता है? अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में एफएम का सिलेबस देखेंगे, क्वांट का सिलेबस देखेंगे, रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम रेलेवेंट है क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है. कई बार जैसे मैंने बोला सिलेबस गिवन ही नहीं होता है. फेज 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, देयर इज नो सिलेबस मेंशन इन द नोटिफिकेशन. देन द पीवाईक्यूज कम्स इन हैंडी. पीवाईक्यूज एक्चुअली हेल्प यू फ्रेम द सिलेबस, बिकॉज अगर आप पिछले 3 4 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, यू विल बी automatically able to decide that what is the syllabus, what are the topics from where they are asking these questions. तो एफर्ट को डायरेक्टेड बनाना है रेलेवेंट पढ़कर. रेलेवेंट कैसे बनाना है? सिलेबस को समझकर, पीवाईक्यूज को समझकर. अगर सिलेबस नहीं है तो पीवाईक्यूज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द सिलेबस फॉर दैट एग्जाम. एक एग्जांपल देता हूं, ये आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक है जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. नाउ दिस बुक इज कॉमन फॉर मेनी एग्जाम्स. इट हैज मेनी टॉपिक्स. इसमें इतने टॉपिक्स हैं जो आरबीआई में नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, मिरर इमेजेस, ठीक है, वेन डायग्राम्स, शायद वो क्वांट में है, रीजनिंग में नहीं है. बट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स
many of the topics which are asked in banking or SSC are not asked in your RBI Grade B examination. तो यहीं पे if you can see the PYQs and find out the topics जो कभी नहीं आए हैं, मतलब they are out of your syllabus, जो पिछले 5 साल में नहीं पूछे गए हैं, एटलीस्ट यू आर श्योर अबाउट देम कि यार ये तो नहीं पूछेंगे, अगर पूछ भी लेंगे एक आधा क्वेश्चन डजंट मेक अ डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ताकि आप बुक्स को फिल्टर कर सकें. And if syllabus is not given, PYQs become even more important. Even if the syllabus is given, you can complement them and make a better understanding of what to filter out and what to note, and that will help you to read exam relevant. ठीक है, तो चलो अब हम फेज 1 की जो सिलेबस है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वांट. Now, as I told you, there is no mention of any topics of quant in your syllabus or in your notification. So these are the topics that we have defined, we have filtered using the analysis of PYQs. We have analyzed the PYQs of 5 years, and these are the topics which you would have to read or which informally becomes the syllabus of RBI Grade B. Percentage, profit and loss, ratio proportion, simplification, simple and compound interest, time and work, pipes and cistern, number series, time, speed and distance, trains and boats, mixture, average, ages, partnership, area, volume, probability, data interpretation, quadratic equation and quantity comparison. So these are the topics. These are the topics जो आपको पढ़ने हैं. अब इसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आती है. मेंसुरेशन नहीं आती, आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आएगा. आई विल नॉट आस्क यू टू रीड फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, तो इस तरह से you can always know that what is to be read and what is to be filtered out if you are sure about the syllabus. तो यहाँ पे PYQs को यूज करके हमने सिलेबस को डिफाइन कर दिया है. और यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यहाँ पे नहीं पढ़नी है. सो दिस एग्जाम इज काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग एंड SSC एग्जाम्स. टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेवल डिफरेंट हो सकता है. सो डू नॉट जस्ट think that you will be ready for RBI Grade B subjects in phase 1 if you have prepared for banking or SSC. ठीक है, अब इन टॉपिक्स को देखने के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वुड बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट हाउ टू प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स. व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स. मुझे कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है. ऑल these questions would be coming to your mind, but since this video is only about decoded syllabus, I would not be touching upon the priority of the chapters and the type of questions asked. That would be discussed in a separate video in this series where we discuss about the game plan of QRE, that is Quant Reasoning English and GA. इसमें डिटेल में बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल है. अभी इसको हम पार्क करते हैं. Now let's move on to the reasoning syllabus. So again, reasoning, there is no official syllabus defined in the notification. What we have done is we have analyzed the PYQs of 5 years and we have shortlisted these topics for you. Alphabetical and alphanumeric series, coding, decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking, blood relation, seating arrangement, puzzles, machine input output, statement assumption, statement course of action, cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. और जो ये वाले टॉपिक्स हैं ना आपके, these are mainly for verbal reasoning. ठीक है, वर्बल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और दीज आर मेनली फॉर लॉजिकल रीजनिंग. कई बार दोनों की अलग अलग बुक्स होती हैं, कई बार एक ही बुक्स में लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग कवर्ड रहता है. और अगेन यहाँ पे भी आपके दिमाग में ये अगर क्वेश्चन आ रहा है दैट सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू कम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि किसका क्या वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो. गेम प्लान, QRE, GA. ठीक है, तो अभी इसको पार्क करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंग्लिश. इंग्लिश काफी इंटरेस्टिंग है. इंग्लिश में इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक्स. एक आपको स्किल डेवलप करनी है and based on that skill there would be question types in your exam which you would have to answer. So you would have to develop basically 3 skills: grammar, comprehension ability and vocabulary. Grammar में subject verb agreement हो गया, tenses, conditional sentences, preposition, complex preposition, conjunction, advanced verbs. These are the skills, matlab these are the topics you would have to read, but there would not be direct questions from these topics. Instead they would be application based in form of error spotting, sentence improvement, close test and rearrangement. Similarly, comprehension ability is the ability to understand things. अब वो comprehension passage में भी आपकी comprehension ability चेक कर सकते हैं, पैराजम्बल्स में या डबल फिलर्स में.
एंड देन द लास्ट इज अबाउट द वोकैबुलरी. तो आपको अगर वोकैबुलरी आती है इन योर एग्जाम, द क्वेश्चंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है पढ़ने पे, बट एट द सेम टाइम यू वुड हैव टू कीप डूइंग दीज क्वेश्चन टाइप्स व्हिच आर द एप्लीकेशन ऑफ द स्किल दैट यू वुड लर्न. तो ग्रामर समझनी है, बट पेपर में ग्रामर नहीं आएगी, पेपर में उसकी एप्लीकेशन आएगी. ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपको समझनी. एंड don't just focus on the question type. Sometimes people start doing error spotting or close test or rearrangement without the understanding of the grammar. That can be fruitful for many, but they would be not much. ठीक है, तो मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, you can do reverse engineering, but if you are weak in English, try to start from the basics by learning these skills. अब लास्ट पे आते हैं जीए पे. नाउ जीए इज वन ऑफ द क्रूशियल सेक्शन बिकॉज इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 80 मार्क्स इन योर फेज वन, विच इज काइंड ऑफ अ 40% वेटेज. अब जीए में क्या है? देयर इज वास्ट ओशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड कंप्लीट कवरेज इज इम्पॉसिबल. अब ये दो चीजें याद रखना, दैट कंप्लीट कवरेज इज इम्पॉसिबल. And the reason is that there is vast ocean of current affairs. By the time you are reading 2 news in the current affairs, 10 would have released new. तो डू नॉट एम टू कवर एवरीथिंग, दैट शुड नॉट बी ऑन योर एजेंडा. ये चीज अगर आप समझ गए तो आप शायद कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर पाओगे. अब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है? It is nothing defined in your notification, but these are the broad areas from which questions are asked. I've also defined a weightage so that it gives you a kind of a clarity. Schemes, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं. पहले बहुत आते थे, बट नाउ द वेटेज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. रिपोर्ट्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आई थिंक इट कैन वेरी बिटवीन दीज टू. किसी साल ये 3-4 ज्यादा आ गए तो रिपोर्ट्स कम आ गई. आरबीआई नोटिफिकेशंस श्योर शॉट, दिस का वेटेज बहुत बड़ा है. अर्लियर इट यूज टू बी 10 to 12, नाउ इट हैज ऑलमोस्ट बिकम डबल्ड इफ यू सी द पैटर्न फ्रॉम लास्ट 2 years. Finance current affairs is another very important area. 8 to 10 questions are asked from it. I'll explain each of these, that what do I mean by this. Finance current affairs में exactly पढ़ना क्या है. I'll explain what is the exact syllabus. Right now, just focus on understanding of the areas. ESI current affairs, again 8 to 10 questions. Then there are normal current affairs. I'll explain you what do I mean by this. There are 15 to 18 questions. This weightage is decreasing. Earlier it used to be 30, then it became 25, and now it is 15 to 18. Actually, they are decreasing questions from this area and they are putting questions in the area of RBI notifications. And there are some questions from static knowledge, 5 to 7 questions. तो ये overall areas हैं and their respective weightage है. And you can clearly see that RBI notification and finance current affairs, if you combine them, this would be around 30 marks. So this is almost like 1/3 of your overall weightage, even more than 1/3. So you cannot just skip RBI notification and finance current affairs. Some people just rely on normal current affairs. I'll show you what these are and you will understand why I'm telling you that some people just rely on that. Its weightage is very, very less. So before I delve further and tell you what do I exactly mean by these areas or what to exactly study in these areas, let's try to define the scope. As current affairs are unlimited, you can read current affairs for past 1 year, 2 year, 3 year, but is it required for the exam? The answer is no. My rule is very simple, which I tell my students. 3/5 rule. 5 is the ideal number of months of current affairs that you should be reading. That is 5 months preceding your exam. But in case you are not able to do so, 5 months पढ़ेंगे तो एग्जाम में you will see that 80 to 85% of your questions are from the immediately preceding 5 months, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न ऑन एफर्ट है. अगर 5 महीने के पढ़कर 85% क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई वुड से दैट इज द बेस्ट रिटर्न यू कैन गेट ऑन योर नो टाइम यू वुड हैव स्पेंट ऑन स्टडिंग करंट अफेयर्स. But if for some reason you are not able to study 5 months of current affairs, at least study 3 months of current affairs, because यहाँ से भी you will see high return on your effort. 60 to 65% of questions in your exam are from the immediately preceding 3 months of current affairs. तो काफ़ी लोग वर्किंग हैं या और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड हैं, दे कैन जस्ट डू अवे विद 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस बाय डूइंग 3 months of current affairs. Though I do not recommend it, but it is the last resort for you. Ideally, it is 5 months of current affairs preceding your phase 1 exam. अब एरिया वाइज थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. फिर टॉक अबाउट स्कीम्स. स्कीम्स में
क्या क्या एरियाज में से क्वेश्चन आते हैं? नॉर्मली दे कैन आस्क यू फ्रॉम pension related schemes such as APY and NPS. I'm just defining the areas. Don't treat these examples as the complete list. There can be other schemes in the pension area. फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जैसे पीएम जनधन योजना, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड नेशनल अप्रेंटिसशिप मनरेगा, आरबीआई स्कीम्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोशल इश्यूज से जो स्कीम है रिलेटेड टू हेल्थ जैसे कि भारतीय जन औषधि परियोजना, वीमेन से रिलेटेड स्कीम्स, वीमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वधर ग्रे, एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, and other areas such as social justice, urbanization, migration, poverty alleviation and environment. Now, you might be feeling कि मैं ये areas randomly बता रहा हूँ या इसका कुछ basis है. So there is a basis for it. All these areas that I am telling you are actually being mapped to your phase 2 syllabus. जैसे कि if I talk about schemes related to social issues in health and education and women empowerment, you can see there is a topic called social justice. So as part of social justice, everyone is entitled to health and education. ठीक है, जेंडर इश्यूज एक टॉपिक है, दैट्स व्हाई वीमेन और गर्ल्स रिलेटेड स्कीम्स बिकम इंपॉर्टेंट. देन schemes related to urbanization, migration, poverty alleviation, environment, these also become important because they are mentioned here. Urbanization, migration, ठीक है, environment भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे आप देखेंगे. So all these topics become important because they are mentioned in your phase 2 syllabus of ESI. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे टॉपिक है, देखिए यहाँ पे. पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नॉट पार्ट ऑफ ESI syllabus, but then they are part of your FM syllabus. So the point is that schemes you shall be reading should be mapped to your phase 2 syllabus. If there is a scheme related to your phase 2 syllabus, ठीक है, you should be reading it. बाकी कोई भी पूछ सकते हैं वो, but this will give you the highest return on your effort. अब रिपोर्ट्स की बात करें, दीज आर दी रिपोर्ट्स दैट आई वुड रिकमेंड यू टू रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. दे वुड बी मोर इंपॉर्टेंट इफ दे आर रिलीज क्लोजर टू योर एग्जाम. इफ दे आर रिलीज्ड फार अवे फ्रॉम योर एग्जाम, के देयर इज अ लॉट ऑफ गैप. फरवरी में आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट आ रहा है, अक्टूबर में आपका पेपर हो रहा है, देन दे वुड बी लीस्ट इंपॉर्टेंट. देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, RBI annual report itself by RBI, currency and finance report by RBI, reports on trends and progress in banking sector by RBI, World Development Report by World Bank, World Economic Outlook by IMF, and other reports related to phase 2 syllabus. Again, जो ESI का phase 2 syllabus है उसमें gender equality, environment, poverty, migration, urbanization, जो सारे topics हैं इनसे related reports important है. Again, is this random what I'm telling you? The answer is no. Because जो ये first part है, first 8 points हैं, this is itself mentioned in the suggested reference material. अगर आप ESI या फाइनेंस के सिलेबस में सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल देखेंगे तो या वहीं पे ये काफी कुछ मेंशन्ड है व्हाट आई हैव लिस्टेड हियर. जैसे कि RBI एनुअल रिपोर्ट आप देखेंगे, दिस इज आई हैव पुट इट हियर. करेंसी एंड फाइनेंस आई हैव पुट इट हियर. ठीक है, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग आई हैव पुट इट हियर. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई हैव पुट इट हियर. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई हैव पुट इट हियर. इकोनॉमिक सर्वे इट्स मेंशन्ड हियर. एंड देन मटेरियल सोर्स फ्रॉम RBI वेबसाइट. तो जैसे कि अब आपकी ये वाली रिपोर्ट है, financial stability report. It's not mentioned here, but since it is mentioned material source from RBI, financial stability report is mentioned on the RBI website. So there is a clear cut mapping that I have done. It's not random. और जो ये 9th point है, when I say that other reports related to phase 2 syllabus such as gender equality, environment, poverty, migration, again this can be mapped to your phase 2 ESI syllabus like the way I did in schemes. तो gender issues आपका टॉपिक है, ठीक है, पॉवर्टी आपका टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका टॉपिक है, एनवायरनमेंट आपका टॉपिक है. सो ऑल दीज रिपोर्ट्स दैट आई एम आस्किंग यू टू डू, these are just examples of the areas in which you shall be reading. Otherwise, the simple funda is that if there is a report related to your phase 2 syllabus, you shall be reading it. ठीक है, so that is about the reports. Now moving on to the RBI notification. So there is not much to tell, but the point is that RBI notifications are very, very important, 19 to 20.
And these can be best done from the RBI website. RBI website pe there is a tab, notifications. Just click on that tab. For the 5 months preceding your exam, try to read the notifications, try to understand the facts, even if you are not able to understand the notification incomplete, because sometimes they can be very technical. तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है. I'll explain you in the later videos कि कैसे questions आते हैं, किस तरह से पढ़ना है, but every notification has to be read if I just want to define your syllabus. In the finance current affairs, the first thing which becomes very important is that if there is any important regulation related to SEBI, ADI, PFRD, or for that matter by Ministry of Finance, that becomes very important. Then there can be some journal questions from the news, such as GDP projections, repo rate settings, and inflation, which keeps being discussed in our economy. Then finance news related to phase 2 topics of FM और फाइनेंस का जो फेज 2 सिलेबस है उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आपको पढ़नी है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा. और दिस इज नॉट रैंडम, आई हैव जस्ट टेकन फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम योर फेज 2 सिलेबस, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे है, ठीक है. सो लाइक दिस, इफ देयर इज एनी न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंस एंड विच कैन बी मैप्ड to any particular chapter of your syllabus, you shall be reading it. But otherwise, I would say, देखिए finance word आ गया तो कोई भी finance की news will become important for you. ठीक है, ज़्यादा मैप करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक बार टॉपिक्स देख लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज यू माइट बी लीविंग सम न्यूज़, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स की न्यूज़ आई है, यू माइट थिंक इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, बट व्हेन यू रीड दी सिलेबस यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज एटलीस्ट पार्ट ऑफ माई फाइनेंस सिलेबस, सो आई शैल बी रीडिंग इट. ठीक है. ईएसआई करंट अफेयर्स में भी सेम चीज है. नॉर्मल न्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी सच एज जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट सेटिंग्स एंड इन्फ्लेशन, यू शैल बी रीडिंग इट. देन economic and social issues news related to phase 2 topics such as regional economic cooperation, international economic institutions, monetary policy, etc., etc., you shall be reading it. And again, this is not random. जो ये वाला point है, I have mapped it to your syllabus. So topics like international economic institutions, regional economic cooperation, ठीक है, anything, even employment generation, poverty, if there is any news which is kind of related to economics and can be mapped to these chapters, will become important for you. Now, normal current affairs, inka weightage, as I told you earlier, it used to be 30, but now this has decreased. Normal current affairs is one thing which is asked in many other banking exams, such as national news related to MOUs, summits, events, international summits and conferences, defense में military exercises, days in news, some major events, purses in news, obituaries, appointments, retirements, sports, science and tech, awards and honors, environment, books and authors. These are typical categories that are asked in many other banking exams or SSC exams, and I've just categorized as normal current affairs. That is actual GA, Journal Awareness. ये थोड़े complex areas हैं which might not be asked in your banking and SSC exams. तो इसका वेटेज पहले बहुत होता था, पीपल यूज टू रीड इट एंड दे यूज टू स्कोर गुड मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स के आते थे. बट नाउ इट्स वेटेज हैव रिड्यूस्ड एंड दैट्स व्हाई if you are prepared for banking or SSC, that might not be much useful in the current affairs of RBI, because what you read there is not much useful here because its weightage has decreased. तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि current affairs are totally different from what you would have been reading in your banking and SSC preparation. And if I talk about the static part, many people think that static questions related to dams, rivers, currencies, capitals, regional festivals, that would be asked, but the answer is no. The static questions here are actually related to the static knowledge or syllabus of phase 2, such as derivatives, bonds, money markets, inflation, etc. Again, this is not random. When I say static concepts related to phase 2, what I mean is that phase 2 syllabus of finance. So here we do study about derivatives, right? We do study about फॉरेक्स मार्केट्स, मनी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स. सो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ही आपको एग्जाम में एज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक नॉलेज पूछे जाते हैं. सो इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर फेज 2, यू वुड बी ऑटोमेटिकली एबल टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर फेज 1.
ठीक है। बाकी लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा दैट बैंकिंग एंड एसएससी एस्पिरेंट्स प्लीज बी अवेयर, इफ नॉट बिवेयर बी अवेयर। डू नॉट थिंक कि जो आपका बैंकिंग और एसएससी का प्रिपरेशन है वो फेज वन के लिए रेडी है। क्वांट रीजनिंग में, एज आई टोल्ड यू, क्वांट में ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं आएगी। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, मिरर इमेजेस एंड ऑल दैट, जो नहीं पूछे जाते हैं। So please select your topics carefully and see the level. The level that is asked in RBI Grade B is not like pre PO exams. It is like mains PO exam, जो कि SBI PO या IBPS PO की मैं बात कर रहा हूँ. And it's completely different from the clerical exams. ठीक है. और GA में खास करके I would like to tell you, because when I'm saying be aware, I mainly want to caution you regarding the GA. As I told you, this is something you do in your banking exams. Yes, you do read reports, you do read schemes, but the level here is completely different. The type of questions and the level of questions that is asked here is completely different. There are a lot of in-depth questions as compared to what is asked in banking. Then RBI notifications and finance current affairs are not that important in your banking exams. But here their weightage is 30 और ये अच्छे लेवल के आते हैं. तो आप अपनी उस प्रिपरेशन को बेस मानकर मत सोचिए कि यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे. ठीक है, वो पढ़ लिया है, काम आएगा, बट दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन. एंड यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी डिफरेंट है. सो प्लीज बी अवेयर, डोंट बी अंडर दैट रॉन्ग परसेप्शन के बैंकिंग का क्वांट और बैंकिंग का जीए कर लिया है तो आरबीआई फेज वन देने चले जाते हैं. कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगी एग्जाम की, मतलब अगर प्रैक्टिस करने जा रहे हो, बिकॉज द लेवल ऑफ पेपर इज एंटायरली डिफरेंट. ठीक है. And before I leave, I want to introduce this comprehensive guide to RBI Manager, which is one-stop solution for you to get all the information related to RBI. आपको सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स के बारे में पता करना है, इस गाइड बुक से पता लग जाएगा. आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, इस गाइड बुक से पता लग जाएगा. आपको डिकोडेड सिलेबस चाहिए, इस गाइड बुक से पता लग जाएगा. तो सारी चीज़ें इस गाइड बुक से पता लग जाएंगी. दिस इज़ वेरी गुड, वेरी कलरफुल, वेरी टर्स. यू कैन रीड द एंटायर गाइड बुक in just one day, I would say, and it would give you a lot of clarity, and maybe it would also give you that next dose of motivation which you would have been looking for to prepare for RBI Grade B. ठीक है. So that's it from my side. Thank you. Bye.